Assalamualaikum and welcome to another webinar by another guest trainer. I am Sabina Victor, the host, and today with me, the special guest trainer today we have is Miss Sana Farrukh. Now, who is Miss Sana Farrukh? Miss Sana Farrukh has done her master's in mass communication from the University of Punjab, and she specializes in early childhood Montessori training, uh, as well as life skills training. And she has an experience of 15 years where she worked as a kindergarten teacher and preschool teacher in Saudi Arabia. Then she also worked as a preschool life skills and art instructor in Islamabad. Currently, she is a mentor for Dastak, that is a teacher training program by the TCF. And there are some notable achievements of Miss Sana, and they are that she is known for her writing, article writing for The Nation News, Jung Daily, and she's received the Most Appealing Personality Award during training at Pakistan Montessori Council. So let's welcome Miss Sana Farrukh. Miss Sana Farrukh, over to you. Assalamu alaikum, Sabina and fellow people. How are you all? I hope you all are well and safe. Um, as you know, I was about the climate problem and the weather problems in Karachi. I hope everyone is safe and doing well, and everyone is having a smooth connection because that was the one reason why this webinar was, you can say, was moved to Sunday. The presentation. Okay, let me just share the screen. Can you all hear me well? My, Yes. am I audible to you? Yes, you are audible. Okay. Okay. Emotional intelligence. Why I choose to. Now, as you all know, before that, let me talk about myself a bit more. Just move the screens. First of all, there's acknowledgement and there's a thank you. Ms. Sabina, I want to take a moment to express my sincerest gratitude for your kind acknowledgement and for welcoming me to the remarkable and influential platform of Impart. It is an honor to be a part of such an esteemed community. Having had the privilege of attending sessions conducted by you, Ms. Sabina, I must express my profound appreciation for knowledge and competence demonstrated throughout our sessions. As an inspiring educator, I deeply admire your role as an educationist. Your dedication to enhancing teaching methodologies and empowering educators is truly inspiring. Once again, I extend my heartfelt gratitude to you, Ma'am Sabina, for the invaluable opportunities and insights Impart has provided me. I am sincerely grateful for your guidance and the privilege of being associated with such a prestigious platform. Please accept my best wishes for Impart's continued success and made it so to unprecedented heights. Inshallah, Ameen. Thank you so much for acknowledging my efforts. And let's start with our session. Before that, I wanted to thank you personally for that too as well. Okay, now, first of all, let me tell you something more about me. Yes, I have been a teacher for last 15 years and a trainer as well. And currently I'm working with Dastak. Dastak is basically a teaching training facility provided from TCF, the Citizen Foundation, where we are offering teacher training courses to very unprivileged background teachers. And before that, I was working with life skills program and I was conducting life skills for basically elementary as well. And recently, we have been planning a curriculum. We have developed basically a content on life skills program, and it's going to be, inshallah, nationwide. It's something a little bit hush hush, but we are trying a level best. Yes, I did my master's in mass communication, and when I was done with my master's, I was promoted in writing, and mostly my articles were on education system of Pakistan. So it was basically from the beginning. Um, when I did my PMC, my Montessori training, I was aware of practical life skills. And eventually then it went into the life skills program.
And there I noticed something that, what, as educationists or as a human being or as a parent, we should all understand that before we say something to students or before we teach something, I think it's very much important that you should do that for yourself first. Are you that kind of person? Are you portraying to be that kind of person? Do you display such kind of attributes towards kids? So that was one of the reasons which thought, which make me, you can say, moved me towards going through towards life skills and then to emotional intelligence. So the reason I want to talk about emotional intelligence is, first of all, it is very limited focus in school. How it is limited focus in school? Well, it is. I mean, if we all go back in our education time when we were in childhood, I'm going to make it a bilingual. जब हम भी बचपन में थे, छोटे थे, तो जब हम पढ़ते थे तो आप लोग को याद है कि हम लोग कब जो है यानी इमोशनल इंटेलिजेंस या इस तरह की टर्म्स के बारे में बात किया करते थे। ज्यादा हमें जो हकूक या फराइज के या इन चीजों के बारे में बात होती किस सब्जेक्ट में होती थी? एंड व्हेन राइट्स एंड ड्यूटीज, ट्रैफिक लॉज। बहुत किसी को अगर याद हो, लेट मी ओपन माय चैट इन एज वेल। ओके, जस्ट so I can see you guys. Okay, okay. Yes, social studies. It was only a part of social and Islamiyat, exactly. It was only a part of social studies or Islamiyat. It has a really limited extent. And what about the teachers? Do you think what was kind of relationship we were having with the teachers? Were we really free to ask them questions? I mean, not everyone, obviously, everyone can have different experience, but I'm talking about mostly. I mean, in majority, yes, strict, exactly. It was strict. We were not supposed to ask questions or to even form our opinions. And ज़्यादा ज़्यादा हमें English language subjects में थोड़ी सी मिल जाया करती थी रायत, you can say. Or I think when I was in school and I found my English teachers very open. I found them so open about talking about things. Maybe because the nature of English literature and English language was like that. But it was really hard to ask a question to a teacher, or when she used to talk about anything, we weren't allowed to interfere in the lecture, right? I hope everyone understands with that and relates with that. So what happens is very few teachers usually used to exhibit that, and it's just not way 20 years back. Still, I find it that when it comes to teaching, many of the teachers in very good private schools, they agree with this kind of technique. They want the, in the name of classroom discipline, class control. क्लास कंट्रोल रहेगी, मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए, बाकी कुछ हो ना हो, लेक्चर जरूर कंप्लीट हो जाए. So there was this thing that was, it usually I noticed that कि ये usually होता था. अच्छा, secondly, personal career challenges. Even the heads, even the coordinators, they were like the same thing. I mean, if we were the teachers and we had our heads, we had coordinators and academic leaders on ourselves, and they were really, they didn't know how to communicate and the pressure, and they didn't know how to take the pressure. And usually क्या होता था, वो pressure teachers के ऊपर आता. आज भी मेरे ख्याल से जो है हम ये चीजें देखते हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज आउट होता है. एंड इट्स नॉट एनी, एक तरह से अच्छी तरीके से इमोशनल को, यू कैन से, वो एक सिचुएशन को हैंडल नहीं किया जा रहा होता. दे आर स्टिल शाउटिंग, यू कैन सी द बॉस इज शाउटिंग, you can see the cycle, the head is shouting on the teachers taking out on students. The cycle keep on going and going, and again it did not reflect well. And then at that moment when I am teaching life skills to kids and when I'm teaching about emotional management and everything, it was not reflecting at all that I was teaching anything. Yes, exactly, classroom controls the main issues, but then there are ways to control the classroom. There are so many techniques and so many trainings going on these days, how to control a classroom and how to divert children's students attention towards it. I mean, we have to learn, we have to upgrade ourselves. Then again, biased approach to life skills, again the same, that I find it very biased. I mean, every teacher is like screaming and shouting rather than being composed and calm if it comes to the stressful situations. So, and then the urgency of the hour, yes, it is a very relevant because right now, the emphasis on emotional intelligence is very crucial.
It's I was providing when I was providing life skills training. That was one thing. That is one important thing for someone to succeed, or you can say, for your to achieve your goals. You need to have emotional management skills. You need to develop them. So that was some of the reasons. And relevance across professions. You can see there are many professions right now: business professions, medical professions, government professions. Like they are inculcating these skills right now in their curriculum in universities, as well as they are also inculcating these skills in the professional level right now. Every other month, you can see big corporate companies are hiring professional people to, make them learn about these skills. So we have to talk about emotional skills or emotional intelligence skills in our academic you can say in universities level. It's very much important if they learn it on a very, you can say, early age. So that's why my basically I was working with early years and then to the elementary level. And I think if, when you work things out in these levels particularly, uh, there are chances of really good results. I mean, they understand, they interpret the skills very well, they demonstrate the skills very well. So my emphasis basically to provide these skills to the teachers who are especially who are teaching elementary level or place group level. Okay. Now, now that we have talked about why we need to, let's refresh ourselves and let's see how many of you understand emotions and how it affects you. Okay, the screen is in front of you. You can even answer me on the chat. Okay, what do you think? What kind of emotion is this portraying? What do you think? Can you express this emotion? Yes, exactly. It's anxiety. Yes. But anxiety and depression, their state of mind, what are the emotions behind that? Yes, but what kind of emotions? What do you what can you name these feelings? ये नाम क्या हो सकता है इन feelings का? क्या आपको करता है कि ये anxiety और depression में बदल? Sad, exactly. Hurt, है ना? गुस्सा, sadness, grief, loss, है ना? ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इस स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करती है. एग्जैक्टली, बिल्कुल. बिल्कुल फेड अप, बिल्कुल एग्जैक्टली, बेबसी. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस इमोशन? क्या फीलिंग आती है इसको देखकर? हैप्पीनेस, एग्जैक्टली. एंड लव, लव इज अ फीलिंग. पीस, एग्जैक्टली. लव, पीस, हैप्पी, एग्जैक्टली. एक्साइटेड, यस. Yes. Contentment, joy. You feel that you're getting that, and the state of mind कैसा है आपका? Peaceful state of mind है, contentment है, that you're feeling happy with this particular person. I'm sure they're sisters. Okay, what about this one? Emotional charades. What about this picture? What do you think? Anger, yeah. What else? What's going on? हो क्या रहा है इन दोनों में बेचारों? ये तो हम मेरे ख्याल से इट्स डेली के हम बहुत यानी कॉमन हो गया ये ईगो. Yeah. Yes, conflict, but I'm talking about emotion over here. और दोनों में आपस में क्या प्रॉब्लम लग रही है? क्या से कहेंगे आप? रिजेंटमेंट, नाराजगी. ठीक है ना, नाराजगी है, रिजेंटमेंट है. क्यों है? कुड बी इमोशन ऑफ एनवी, कुड बी इमोशन ऑफ हेट्रेड, कुड बी इमोशन ऑफ गिल्ट, है ना? Differences of opinion, yes, anything which can, so you can see there's a different emotions on the girl's face and different emotions on the man's face. Look, he shows a bit of sadness, है ना? Disappointmentness, and she shows a bit stubbornness, right? So there's a resentment going on. Okay, now next. इधर क्या हो रहा है? क्या हो गया यहाँ पे? Oh my goodness. हाँ, एग्जैक्टली. रहीला बात को डिसाइड, हमारी कम्युनिकेशन जो है ना, बहुत प्रॉब्लम्स हैं कम्युनिकेशन में. वी डोंट एग्जैक्टली फटाफट. एग्जैक्टली. और कहाँ हो रहा है? डू यू व्हाट काइंड ऑफ पीपल, कैसे लग रहे हैं ये लोग? पढ़े लिखे हैं ये? किस कैलिबर के लोग हैं? हेट्रेड, एंगर, एग्जैक्टली. Yes, educated one. They are educated people. They are the ones who are making decisions for us. हमारी और ये तो खैर वैसे ही पूरी दुनिया के लिए डिसाइड कर रहे होते हैं ये जो है, लेकिन इनकी इमोशनल लेवल देखें कहाँ जा रही है. बिल्कुल बिल्कुल. आज सेम कितने हमारे जो है
I didn't want to reflect on my presentation, but आप लोग बता सकते हैं, आप लोग में से कि आप लोगों ने कभी ऐसे देखे हैं हालात जैसा एक दूसरे को मारे? बहुत पावरफुल लोग हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड लोग हैं, और सिर्फ हाईली एजुकेटेड भी नहीं, बहुत यानी स्किल्ड, अपने एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा यू कैन से स्किल्ड लोग हैं और एक्सपीरियंस लोग हैं, और वो इस तरह लड़ते हैं। लॉयर्स में होगी, लॉयर्स मूवमेंट कभी देखी है? कितना हमारे सोशल मीडिया भरा हुआ होता है इन चीजों से, है ना? It's full of all these videos. Every other, and God forbid, if you just click on one, after every 5 minutes, you will find the same format. That's the AI of the Facebook. Yeah, exactly. Assembly में कैसे उठा के चीजें फेंकते हैं? I mean, that's, you can say, क्या? Exactly, Maria. वही बात है. Whether you belong to an elite class, whether you belong, it's about the tarbiyat, you can say, the brought up, the manners, the training. It's not about education anymore. It's not about IQ anymore, है ना? Okay, one more. What about this? बिल्कुल तरबियत की कमी, हाँ ये तो है बिल्कुल. Frustrated, exactly. Fed up, frustrated. क्यों हो रही होती? कौन ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है? कौन सी फीमेल से होती है ना? क्यों हो रही होती फीमेल्स ऐसे? मुझे तो टीचर भी लग रही है ना? Why do you think women are so frustrated, and they get frustrated and irritated very quickly, or you can say they get more frustrated quickly than the men? Hormone issues. ना ना ना, बट आई डोंट रियली कैन नॉट हैंडल सिचुएशन. आई अल्लाह ताला ने जो फीमेल का ब्रेन बनाया है, इट इज फॉर मल्टीटास्किंग. यू नो दे आर वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग. एज अ टीचर्स, एज अ मदर, एज अ daughter, you how you manage your household, how to manage your schools, your classes, your task. And there are so many people who are handling, whether they know emotional intelligence or not, but they are handling it. है ना? कभी कभार बात में रात में बैठते हैं ना, सोचते हैं कि हाँ ये सारे काम मैंने आज किए, मैंने नमाजें भी पढ़ ली, मैंने ये भी कर लिया, मेरे बच्चों के सारे काम हो गए, मेरे टास्क भी कंप्लीट हो गए, है ना? ऑल्दो इट वाज ओवरबर्डनिंग, हो जाता है, यस. बट अल्लाह ताला ने फीमेल को बनाया है फॉर मल्टीटास्क. बट अगेन, अगर हमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी तो फिर हमारा भी ये इस पिक्चर वाला हाल होगा. ठीक है, वी विल जस्ट ब्रस्ट आउट एनीवेयर टू एनीवन. गॉड नोस, गॉड फॉरबिड किसकी शामत आती है ना. हाँ. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस पिक्चर? आई रियली लाइक इट. आई फील सो गुड अबाउट इट. हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, एग्जैक्टली, एक्साइटेड, enjoyment, है ना? cheering, yes, happy. कहाँ हो रहा होता है ज्यादातर? पाकिस्तान टीम की जो जज्बात होते हैं, वो कहाँ ज्यादा एक्साइटमेंट आपको लगता है? एक्सट्रीम एक्साइटमेंट कहाँ नजर आ रही होती है? स्टेडियम में? क्रिकेट पे? एग्जैक्टली फरहाना, क्रिकेट में है ना कितनी एक्साइटमेंट होती है. यू स्टार्ट हैविंग स्वेटी पाम्स, एग्जाइटी, है ना, एट द सेम टाइम कितने मिक्स्ड इमोशंस होते हैं, एंड देयर हाइटेंड इमोशंस. एग्जैक्टली, इंडिया पाकिस्तान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल. बिल्कुल, इट्स जस्ट अ गेम, इन द एंड ऑफ द इट्स जस्ट अ गेम, राइट? अच्छा, वन मोर. व्हाट अबाउट दिस? व्हाट डू यू थिंक? ये how can you define this person? Do you think this person is working on a very high level, highly professional? Yes, anger. And yes, his boss yelling. Exactly, very good. Insulting, yelling. है ना? How many of you go through it? I mean, if you are working ladies, how many of you go through training? बहुत ज्यादा तो नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया कि आपका बॉस या आपके जो हेड्स आपको इस तरह चीखें या इंसल्ट करें? होता है ना? हो जाता है ना? तो फिर ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है वो किसी वेरी नहीं करती है एजेस के ऊपर. ये हर लेवल के लिए है. बिल्कुल. कभी भी हो सकता, कभी कभी भी हो सकता है. बिल्कुल, हम इसको भी देखेंगे क्यों होता है. अच्छा, ये वाला भी तो देखें. ये अभी हमने शुरू में बात की थी, हमारी जो बचपन में हमारे साथ जो होता था, है ना, ऐसी टीचर होती थी बच्चों को जो कहती, हालांकि probably these kids would be just talking and having fun, right? And then the teachers like strict, very strict on them. You can see the screen. बस fear भी हो रहा है, too much strict, है ना? Strict teacher, yes, very strict teacher. And they are really scared. I can see the fear in their eyes. Okay, trying to discipline the kids this way, it's just not right. You're not disciplining them. It's just like either there are two things. Either
a child will actually go in a complex, ठीक है, eventually आगे वो बेचारा बच्चा जो है उसके कॉन्फिडेंस इश्यूज सब सामने आएंगे. यस, अथॉरिटेटिव टीचर, वेरी गुड Dalit. एंड आइदर वन, एक टाइम ऐसा आएगा बच्चे जो है ना नाडर हो जाते हैं, दे स्टॉप केयरिंग, लाइक दे डोंट केयर, ओके ये तो रोज का डांटती है, रोज का चीखती है, व्हाट्स अ बिग डील, राइट? So then again, this kind of a display of emotions or this kind of strictness or this kind of state of mind does not have a good effect eventually, right? Very good. Okay. Now, have you noticed anything common in all the images of emotion? Shade क्या था हमें common चीज क्या लगी थी उसमें जो लोगों के बारे में? Oh, Ambreen, I totally understand. I don't worry. I relate with you. मुझे भी बहुत जोर से एक लगा हुआ है. I was in grade 5. Different emotions, yes. Variations, yes. But what was one thing common about it? लोग कैसे थे? गरीब थे? पढ़े लिखे अनपढ़ लोग थे? They were not educated. They were not. या तो मैं हूं ना लगाऊं पिक्चर्स इसमें जिसमें गरीब तबका है लड़ रहे हैं. Educated, exactly. They were educated people, exactly. And they didn't had control over themselves. They didn't had control on their emotions. और आप ये देखें कि उनकी स्टेट ऑफ माइंड, आई मीन जो भी वट एवर द इमोशंस जितने वो हाइटेंड होते हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारी स्टेट ऑफ माइंड को. सो बाय दिस गेम यू अंडरस्टैंड नाउ द हाइटेंड इमोशंस दे अफेक्ट योर स्टेट ऑफ माइंड. दे मेक यू गो स्ट्रेस, दे मेक यू गो इन डिप्रेशन, दे मेक यू गो इन एंग्जाइटी अगर वो मैनेज ना हुए हुए हों. है ना? ऐसी बात है ना? कभी फील ऐसी फीलिंग आई है? एवर फेल लाइक दिस? हम्म. कभी ऐसी कोई फीलिंग आती है? बर्डन डेली, मोस्टली बर्डन. Yes, even though in the end of the day, those work are going to be like done. Those tasks are going to be completed. वो काम complete हो जाएगा. Even for people who are like थोड़े से lazy भी हो जाते हैं, procrastinate भी जो करते हैं, उनके भी काम हो जाते हैं, ठीक है. But जो mental state होती है वो क्या हो रही होती है हमारी? So many tasks. उफ, अब ये करना है. ओके, एकदम सेल फोन पे रिमाइंडर आ जाएगा, कुछ ना कुछ नजर आ जाए, बच्चे नजर आए, है ना? व्हाट? तो ये सारा ओवरबर्डनिंग क्या कर रहा होता है एग्जैक्टली? खुमशाद, इट्स राइट, इट्स खुनशा, सॉरी, खुनशा. Yes, under pressure, it makes you drained out. Yes, and it stresses you out. It stresses you so much out that you are not able to think. ओफ, अब मैं क्या करूं, मैं टास्क करूं या नहीं करूं, कौन सा करूं, है ना? ऐसा आ जाता है ना, chaos, chaotic. आपका माइंडसेट बिल्कुल chaotic हो जाए. So this is one of the reasons. Stress, burnings, and everything. These are workload responsibilities. They are one of the reasons. They are the reasons for these are stress factors आप जिनको कह सकते हैं. अच्छा, lack of acknowledgement भी stress factor है. Do you agree? Lack of acknowledgement. Do you agree with the statement? Definitely. Because you're working so hard, you're trying how, whatever notion that whatever kind of work you're doing, the whatever way you are doing the work, but you are getting the work done, right? But sometimes you need acknowledgement. And it's just not from your bosses or from your heads, it can be from your colleagues, right? The moral support of, like, let's say a situation, if you are like having a very bad day, you were like scolded by your head or by boss, and you've been working really hard, and then your peer, I mean somebody from your colleague, she gives you moral support, how would you feel? Do you feel like, I feel less, I feel better? Yes, exactly. Acknowledgement as well as letter appreciation. Exactly, Maria. तो कैसी फीलिंग होती है जब आपके आसपास जो लोग होते हैं आपको सपोर्ट करते हैं कि नो यू कैन डू इट, आई नो, नो नो यू बीन, वी अंडरस्टैंड, वी एक्नॉलेज द हार्ड वर्क यू पुट इन, राइट, वी एक्नॉलेज योर एफर्ट्स. कि क्या फीलिंग आती है ना? यू फील बेटर, राइट? है ना? Exactly. Yes, they motivate you. Very good. They motivate you. They motivate you to do something better. है ना? आप कर सकते हो. Yes, exactly. Exactly. I'm glad that this conversation is going in a flow. Yes, there are some people who will just criticize you and they will never appreciate you. Those kind of people, they are different mindset के वो लोग होते हैं. उन्होंने बना लिया होता है अपना, फिक्स माइंडसेट होते हैं, वो बना चुके होते हैं, that you cannot change. But that's just different topic.
Exactly. Moral supports makes us feel better in many ways. Exactly. Exactly. Now, by shedding light, by shedding light on significant emotional intelligence can foster a society where individuals are equipped with the necessary skills to navigate emotions. It builds meaningful relationships and make informed decisions. Let's delve into the topic, explore the transformative power of emotional intelligence in all aspects of life. Now, क्या होता है कि अब जब हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में अपने इमोशंस के बारे में पता चलता है और हमें जब ये देखते हैं लोगों सोसाइटी के अंदर सारी जो हमने एग्जांपल्स देखी हैं तो उससे हमें आइडिया होता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है एक सोसाइटी को बेहतर बनाने में ठीक है और लोगों के अंदर बेहतर तरीके से जिंदगी गुजारने में ठीक है रिलेशनशिप्स अच्छे बनाने में अच्छे डिसीजंस बनाने में ठीक है और ये कितने इंपॉर्टेंट स्किल्स है सोशल स्किल्स रिलेशनशिप स्किल्स गुड डिसीजन मेकिंग दीज आर 21st सेंचुरी स्किल्स ना है ना कितनी इंपॉर्टेंट है तो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं हम ये पोर्ट्रे कर रहे होते हैं बहुत लेस वेरी लेस वी आर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ट्राइंग ऑल द एजुकेशन राइट नाउ द एजुकेशनिस्ट जो हैं और जो एजुकेशनल टर्नओवर है इन पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है बट स्टिल इट इज लेस इट नीड्स मोर टाइम ठीक है तो वेस्ट के अंदर तो ये चीजें बहुत ज्यादा होगी वेस्ट ने छोड़ दिया आईक्यू लेवल वाला काम जो हम लोग करते थे ना बस डिग्री ले लो बस डिग्री ले लो डिग्री ले लो यूल गेट अ जॉब डिग्री ले लो यू विल हैव एवरीथिंग डिग्री कह लो आपको बीवी भी अच्छी मिलेगी है ना होता था ना क्या हमारे उसमें एक जनरेशन 10-15 ईयर्स बैक वाली जनरेशन क्या बन गई डिप्रेशन में आ गई तंग आके रो के एफएससी में मैट्रिक में आके मार्क्स ले लेके है ना उसके बाद इंजीनियरिंग कर ले हमें इस यूनिवर्सिटी में भी मिल जाए ठीक है बन भी गए इंजीनियर्स भी बन गए लेकिन स्किल्स गायब रॉबर्ट से एग्जैक्टली स्किल्स गायब है क्या होता है फिर स्किल्स जब चली जाती है स्किल्स नहीं फिर उनको वही प्रॉब्लम्स होती हैं दे आर दे गेट इन डिप्रेशन they don't have you can say control over the emotions वो सारा जो है eventually it builds up and then it explodes and then what happens abuse की cycle start हो जाती है verbal abuse or verbal to physical abuse there's so have you heard there's so many people with highly you can say high backgrounds and उनके बारे में news आ रही होती है कि they are physically abusing their wives or abusing others है ना कि क्या there's something is missing इतनी पढ़ाई इतनी एजुकेशन इतने अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों से डिग्रीज लेके इतने अच्छी पोजीशंस पे बैठ के आप अगर आपके बारे में न्यूज आ रही है सो देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग राइट इन आवर लाइफ एग्जैक्टली हम लोग को ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके एजुकेशन में और एक तरबियत में एक ट्रेनिंग में है ना ब्रॉटअप के अंदर ट्रेनिंग भी नहीं ब्रॉटअप के अंदर हम एक कर ही नहीं सके हमने सॉफ्ट स्किल्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया हमने सॉफ्ट स्किल्स को उठा के सोशल स्टडीज में फेंक दी या सॉफ्ट स्किल्स का एक छोटा सा पार्ट कर दिया ठीक है बट नाउ इट्स अ चेंज इट्स अ ह्यूज चेंज वेस्ट में तो बहुत ये 50 साल पहले हो गया चेंज अब पाकिस्तान में भी आ रहा है सो मूविंग ऑन डज एनीवन नो दिस गाय किसी को पता है इनके बारे में यस हु इज दिस गाय इन्होंने स्किल सेट की ही बदल दी इन्होंने एजुकेशनल इन्होंने प्रोफेशनल जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था ना प्रोग्रेशन का बिल्कुल चेंज कर दिया दिस इज डॉक्टर डैनियल गोल्डमैन I will tell you. He's Dr. Daniel Goldman. He's an author, he's a psychologist, he's a science journalist. And he wrote a book on emotional intelligence in 1995, which was a best-selling book for around a year. And then this book was translated into many languages, right? And इन्होंने emotional intelligence को जो है एक तरह से वर्ल्ड में जो है क्या कहते हैं उसको फैलाया उसका सही मीनिंग बताया उसके बारे में इम्पोर्टेंस जो थी इमोशनल इंटेलिजेंस की इन्होंने एक तरह से की दे आर मेनी पीपल बिहाइंड देम बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वो टेक्निकल तरीका है वो डिफरेंटली इंशाल्लाह if there is going to be a next session we can talk the details regarding the background of the emotional intelligence but we want you to stick towards this that what did he do what is his contribution okay. So, Dr. Goldman, his definition for emotional intelligence is that as a person's ability to manage their feelings so that those feelings are expressed appropriately and effectively. According to Goldman, emotional intelligence is the largest single predictor of success in the workplace. Why do you think that? Is it right? Is it right what he's saying? Right.
because it's an ability to manage your feelings, the feelings, and how you are going to manage your feelings and how you're going to express them appropriately and effectively. सोचना है, you think before you express your words out, you think before. self awareness होती है, अपने बारे में पता चलता है कि वो मुझे तो गुस्सा आ रहा है, but if I'm an emotion intelligent person, I will understand that I'm feeling frustrated, I'm feeling like that. I need to do something about my emotions. Yes, I have to manage my emotions. And that's the one reason, if we are not able to manage our emotions in a workplace, so it will become chaotic, है ना? For instance, क्या होता है? Let's say there are, एक मैं बताती हूँ लोगों को, छोटा सा example कि I I knew someone who was running an institute, right? And the person had a big IQ. Like she was very smart. She had everything done, the task, the everything, the creativity, everything. But again, जब pressure built हुआ, like if we were having this kind of, you can say, uh, uh, छोटा सा एक function type था for the kids and for the parents to come in, and that pressure was so much for her that she started screaming on everyone, every teacher over there. And the task जो थे एक से बढ़ के एक problems आ रही थी, and it was not going well. So one of the main teachers told her to calm down, and eventually it went. तो कहने का मकसद ये है कि जब हमारे ऊपर टास्क भी आएंगे, हमारे पास वर्क भी आएगा, हम लोग को बर्डन भी होंगी, ये तो चीजें हैं, these are things which will be you know आती रहेंगी। ये तो बिल्कुल अनसर्टेनिटी जो है हमारी लाइफ में है, कभी भी कोई सिचुएशन हो सकती है। बट हम उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं, ये हमें इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है, ठीक है। और इसी तरह हम अपने वर्क प्लेस के अंदर सक्सेस लेकर आ सकते हैं, ठीक है। नाउ, इमोशनल इंटेलिजेंस के there are around five components for emotional intelligence. First is the self-awareness. Second is self-regulation. Sorry, it went up down, and then motivation, the social awareness, and empathy. Now, what is self-awareness? It is basically the ability to recognize and understand your thoughts and feelings and emotions, which can affect your interaction with others. Right? यानी कि हाउ यू परसीव एंड रीजन अंडरस्टैंड योर इमोशंस, ठीक है, कैसे आपको अपने इमोशंस के बारे में समझ में आई, मैनेज कैसे करना है, राइट, ठीक है ना। आपको गुस्सा आ रहा है तो अगर आपको आइडिया हो जाएगा कि देन आई एम फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड आई एम फीलिंग एंग्री, देन आई नीड टू काम माई सेल्फ, राइट। उसके बाद सेल्फ रेगुलेशन है, disciplining and managing your time, planning ahead and realizing what you control and control, like what, how you can manage those emotions, how you understand others emotions. And second, first of all, सिर्फ गुस्सा आपको नहीं आता, दूसरों को भी आता है। दूसरा भी अगर आपके ऊपर एक तरह से गुस्सा निकालना है तो उस टाइम पे आपने कैसा स्टैंड लेना है, क्या इज इट अबाउट, आपने ये सोचना है कि इज इट अबाउट मी। नो, इफ द पर्सन इज लाइक कमिंग टू मी और वो इस तरह चीख रहा है, दहाड़ रहा है, उसको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का नहीं पता है, एंड यू आर इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन, you will understand it and you'll try to stay calm and composed in that position, right? Not reacting, not, you know, making it a conflict. तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो लोग होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को एक तरह से ना बहुत खराब तरीके से होने से चीजों को बेहतरी की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस में आपको अपने इमोशंस के बारे में पता होता है, आपको अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हो, आप उनको मैनेज करने की कोशिश करते हो, है ना। फिर सेल्फ रेगुलेशन क्या होती है, जिसके अंदर आप जिसको मैनेज करते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं हेड, कि मैंने आगे अपने आप को किस तरह मैनेज करना है, या सेल्फ मैनेजमेंट भी आप इसे कह सकते हैं, कि आगे मेरे लिए जो इश्यूज हों या आगे मेरे लिए जो काम या टास्क है उसको मैं प्रॉपर तरीके से करूं, और हम इस दोबारा स्ट्रेस फैक्टर को ज्यादा कोई चीज कंट्रीब्यूट ना करे। फॉर इंस्टेंस, हमारे पर इतना वर्कलोड होता है, बीइंग अ टीचर, बीइंग मदर, वी आर मल्टीटास्कर्स, राइट। हमारे पर फोकस नहीं हो रहा होता हमारा, तो हम वी इफ वी आर इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल, वी विल रियलाइज दैट यस, वी आर केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, राइट, एंड वी नीड टू प्लान अहेड, वी नीड टू फिक्स दोस टास्क, राइट। उसके बाद एम्पैथी, put yourself in others shoes, considering their feelings, remember everyone can make mistakes in yourself. Now empathy में लोग अक्सर ना एक चीज करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पैथी, अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं एम्पैथी को किसी एक और चीज के साथ। क्या होती है एम्पैथी, ये बताएगा। अक्सर हम किस चीज को एम्पैथी के साथ कंफ्यूज कर रहे होते हैं। सिंपैथी, एग्जैक्टली मासूमा। सिंपैथी में क्या होता है, आप किसी से दुख उसका कहते हैं, नहीं, आई आई फील सॉरी फॉर यू, आई फील सॉरी फॉर, या किसी की थोड़ी हेल्प। एम्पैथी समथिंग एल्स। एम्पैथी इज टू थिंक, इफ यू आर इन दिस पर्सन शूज, अगर ये तुम्हारे ऊपर ये प्रॉब्लम होती, तुम कैसे फील करते। उसके बाद यू आर एबल टू हैव मेक गुड डिसीजंस अबाउट इट, कि हाँ, अगर मैं इस शूज में हूं, मैं ये प्रॉब्लम फेस करूं, क्या मैं ये काम कर सकती थी, राइट।
So this is so much important. फिर social awareness, उसके बाद आता है social awareness, that you understand people's emerging talents and capabilities optimistically. Like you understand your people, you understand your peers, you acknowledge them, you know everyone is working hard, right? And you give them the you can say those that support, that moral support, so which so that they can be they can also provide with the moral support, right? ये बहुत जरूरी होता है. रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो सिर्फ एक तरफ नहीं चलते, दोनों तरफ चलते हैं. Like you have to be nice to them, you also have to give to understand them, acknowledge their talents, their capabilities, right? And then eventually the other person will do that. It's not that कि एक बंदा ही कर रहा है और दूसरा ना करे. In a group सोशल अवेयरनेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. फिर उसके बाद मोटिवेशन क्या होती है, फिर जब आप गुड डिसीजन मेकिंग आ जाती है अपनी मिस्टेक्स से लर्न करके, है ना? आप देखिए, हम इंसान है ना, मिस्टेक्स हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करके, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म्स लेके, एक कोलैबोरेटिव अप्रोच को लेके चलना, मोटिवेट करना, ठीक है, यू विल बी इवेंचुअली मोटिवेटेड टुवर्ड्स गोल. ठीक है. ओके. नाउ बिफोर वी elaborate more about it, let's just go and have a look in the journey of Miss Sarah. This is the Sarah. She's a teacher, right? So this is a bit role play so that you can understand emotional intelligence very well. Okay, I hope it आप लोग को इसमें enjoy करें आप स्टोरी को. So now थोड़ा सा मैं background देती हूँ. Miss Sarah, she's a very young teacher. She's a fine teacher, and you can see that she has a lot of degrees, and she is probably hired because of her academic qualifications and a good IQ, right? But she's a young teacher. Okay. So what happens? So background is that Miss Sarah is hired, and she just enters in the school feeling anxiety and probably feeling very anxious. Why do you think she was feeling anxious? What do you think is missing over here? Probably because she was feeling anxious because there were so many tasks which were given, right? And then one of the tasks were left. Like she was given the task to make a planner, she was given the task to create papers, and there were few many more. So what she was able to do, that she was only able to create the papers, and she forgot to make the lesson plan, or you can say she didn't find the time to make the lesson plan. ठीक है. So she's a young teacher, so it get you can understand. पर जब हम नए नए टीचर्स आते हैं तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है या कितना मुश्किल होता है टास्क को हैंडल. So what happens that Miss Sarah is already feeling anxious, nervous. Oh my God, it's my first day, and look what's going on to happen. So the coordinator approaches and she goes like, "Good morning, Sarah. Have you finished your lesson plans?" Because this is one regular question we all teachers are asked about our lesson plans. Are they done? Are they done for this week? You know, do you have a plan for this day? Right? होता है ना, कितना ये lesson plan कितना important चीज है हमारे लिए. So what happens is that Miss Sarah, she knows that she has not, made the lesson plans, but eventually she just have to, you can say, Miss, I will submit them by the end of the day. यानी वो task जो है वो आगे से आगे चला जा रहा है, ठीक है ना? She's like she hasn't done them, but वो आगे से आगे task जा रहा है. So the coordinator does not respond. वो चूंकि वो खामोश रहती हैं. Just a second, let me nice. She does not respond, and Sarah की जो anxiety level होता है, she becomes increasingly worried and starts to overthink. Oh my God, what will she think about me? Probably she will say that I'm such a lousy teacher. है ना, thoughts सारी होती हैं. Stress कैसा हो रहा है mind? Anxious stress हो रही है, anxiety हो रही है, fear आ रहा है, और उसके बाद वो क्या उसकी feeling हो रही है, वो she's उसका mind is all बिल्कुल blurry होता जा रहा है. And then it gets so blurry that she's so overthinking that she students greet her but she does not even notice. She's so consumed by her thoughts, right? आगे क्या होता है सारा के साथ? तो कोऑर्डिनेटर आ जाती है दोबारा मिस सारा की क्लास में. शी कम्स बैक एंड शी रिमाइंड्स सारा, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डिस्ट्रीब्यूट द वोकैबुलरी लिस्ट फॉर स्पेलिंग बी. ठीक है, देयर वाज वन टास्क दैट शी वाज सपोज्ड टू डू because it was coming in 2 weeks of the spelling bee competition. है ना, कितना spelling bee competition and everything, है ना, it gets overwhelming, right? Then Miss Sarah realizes that she misplaced the list. Oh my God, adding to her emotional turmoil. Her thoughts have become intrusive, making it hard for her to focus. अब तो बिल्कुल हाथ से क्या, oh my God, होता ना कि okay, you come up with this, okay, it's okay, lesson plan से जान छूट गई, चले, I'll start with the class and everything, and then you're focused, and then something comes up, and you're like, oh, I forgot, totally blank, है ना? बिल्कुल exactly सरीना, totally blank हो गया, बिल्कुल फोकस ही खत्म हो गया. अब क्या होता है कि वो फोकस खत्म हो गया, सडनली अ पावर आउटेज अकर्स. अब एक बिल्कुल अनसर्टन कंडीशन पाकिस्तान में होती है, एग्जैक्टली पाकिस्तान में तो हर दफा होती है, लाइट चली जाती है.
ठीक है. And the classroom gets hot and chaotic because every student is now there complaining to Miss Sar. Miss Sar is getting hot in the classroom, and Miss Sar is already so much frustrated, and already she is feeling so bad about not submitting her lesson plan, and now she has lost. She has misplaced the list of spelling bee, and now the class the slide चली गई है. Oh my God, है ना कितनी वो uncontrollable. Yes, yes, again the issues are getting uncontrollable. The heat is there, the kids are out of the mismanaged now. So what happens? Miss Sarah loses controls and shouts out at the students in frustration. She shouts out in front of the students, and everyone in the class is suddenly very silent. See, Sarah's stress build up, all those thoughts, everything, and then uncertain situations. Very relatable situation. Yes, exactly, Nimra. आजकल जो पाकिस्तान में हालात है, it is very relatable. That's why I choose this situation. And she is just, and this usually happens. हम students के ऊपर इस तरह burst out कर जाते हैं अपना stress हम because it's easier. क्या ये natural है ना, छोटे हैं ना, हमसे छोटे हैं, it's their juniors, then it's easier to take out your frustrations on them. I mean, it's very bad, but then I don't know, it's a human psyche or something that it's easier to take out your frustrations on them. I don't know for what reasons we think that they will understand or kids will forget about. No, it will always have a very bad effect, right? Just one of the participants was saying that she was slapped when in grade 4, and I still remember the slap in grade 6. So yeah. Yeah, exactly, Sri. Thank you. It's human psychology. So the students are now silent and everything, and the classroom is all silent, and coordinator enters the room witnessing the situation. So the coordinator, has also witnessed the situation. So what does she do? She asked Miss Sarah to step outside with her. She asked the monitor to take over the class, and then she asked Sarah to step outside with her. What Sarah's feeling right now is very anxious, guilty, and she will expect to be reprimanded. उसे पता है अब तो मेरी नौकरी गई. अब तो मेरी नौकरी गई. अब तो मुझे लगता है कि मुझे तो उन्होंने पसंद ही नहीं किया. मेरा प्रोबेशन पीरियड से पहले ही मेरी खत्म हो गई नौकरी, है ना? फीलिंग आती, उफ अल्लाह, इट हैज बीन सच अ बैड डे. ओ माय गॉड, आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू डू इट. क्या फीलिंग आ रही है ना? Giving up, negative thoughts again. Exactly, very nice, Serena. You are continuously your mind is filled with negative thoughts, right? And it is not doing anything right to yourself. It's not doing anything good. It's not, आपको बिल्कुल पेसिमिस्ट करता जा रहा है, आपको डिप्रेशन में लेता जा रहा है, आपको कोई अच्छी चीज नजर नहीं, आपको बच्चे तक अच्छे नहीं लग रहे, right? This is what Sarah is feeling right now. Then what happens? Now Sarah she's so much filled with those guilty thoughts and everything. The coordinator's support and guidance. Now what happens is because the coordinator is an emotionally intelligent person, she asks Sarah to first calm down. And then she asks Sarah to, she offers Sarah a glass of water. She says, okay, take some water, drink, sit down, relax, right? Take some deep breaths, okay? You need to calm yourself down. So when she finally gets Sarah to calm down, and then she asks Sarah what was the all this notion about, what was this all about? जो सारा भी हुआ है आपके साथ classroom में scenario. So the Sarah then tells the coordinator, because the coordinator, why? Because coordinator is supporting, right? She supported her. अगर इनकी जगह कोई कोऑर्डिनेटर होती के और ये इतने आराम से भी बोलती आखिरी के, सर आई डोंट थिंक सो यू आर फॉर दिस जॉब, प्लीज लीव, आई थिंक इट्स मच बेटर दैट यू क्विट, और आई थिंक इट्स मच बेटर वी कैन फाइंड समवन एल्स, और आई गेस इट्स इफ शी जस्ट, और कोई और कोऑर्डिनेटर होती जिसकी इमोशनल इंटेलिजेंस ना होती, वो क्या करती सारा के साथ? और सारा विल को क्या कर सकती? सारा को अगर बोल देती ना आगे के, नो आई डोंट थिंक सो आई एम एबल टू हायर यू, आई नीड्स एक्सपीरियंस, समवन's experience with the teachers, right? Exactly, yes, it's confirming Sarah feels exactly. Yes, coordinator has emotional intelligence. What was she portraying? Coordinator. If she's asking Sarah to calm down, positivity, and what does she possesses? क्या चीज है coordinator के पास जो Sarah जो है उनके साथ comfortable हो रही है? And I'm looking for a word. E, understanding. Yes, emotional intelligence. Empathy. Very nice, Nimra. Empathy.
she knows where Sarah is coming from, because एक टाइम पे वो भी टीचर थी, उन्होंने भी ये चीजें अंडरस्टैंड की थी, उन्होंने भी ये चीजें देखी हैं, है ना? So if the coordinator has an empathy for the teachers, she would guide them, the teachers, how to go about in the classroom, right? So what did so afterwards, she tells Sarah to manage your stress first. You need to calm down. It starts with by managing your stress. You need to be aware of your emotions. You need to reason, understand, and manage your emotions so you can control them, right? Then focus on the self management. You need to focus on yourself. If I'm feeling overwhelmed, if I'm feeling so anxious, I need to calm myself down, right? Because secondly, everyone can make mistakes including yourself. Okay, so when she has an empathy and she understands the fact that everyone can make some mistakes, right? And then good decision kya hua, reflect karna apne upar, कि then you will obviously learn from your mistakes. For example, क्या mistake हुई होगी सारा की? सारा की mistakes थी इसमें? Do you think was Sarah had anything to do with it? Okay, I cannot find the chat. Okay, here it is. Sorry. Yes, she could. She lost, yes, she couldn't manage her time. There was a lack of planning, right? And all these factors were contributing to stress, to the emotions like fear, right? Exactly. Prior planning नहीं थी. और सबसे ज्यादा comfortable हो गई सायरा. सारा फिर जो थी, was she comfortable when she was not comfortable before, right? Because why? She was not comfortable with the coordinator because she didn't communicated her, right? सही तरह बात नहीं की. She did not communicated her. She did not ask for help, right? Yes, she had fears. Communication gap था, है ना? तो डिसीजन गलत ले लिया ना. जब कम्युनिकेशन गैप आए तो डिसीजन गलत लिए जा रहे थे, अपने ही माइंड में, अपने ही थॉट्स के अंदर, प्रोसेस के अंदर है. नहीं, आई शुड नॉट टेल हर अबाउट द लेसन प्लान. टेल हर टू सबमिट इन लेटर इन द इवनिंग. Exactly. She didn't communicate it at all. She was assuming. Exactly, Serena. Assuming. So it was not reflecting well, right? So eventually, when the coordinator, she does a good decision by reflecting yourself, by reflecting and communicating. कि आप अपनी गलतियों से सीख के, ठीक है? We have to learn from our mistakes. So this was the role play which elaborated about it. So now we have some short questions about Sarah, which we were discussing, right? Okay. So what will happen? What do you think happened, which really contributed? Okay. Yes, Nimra, she was overthinking. What really contributed to that outburst of Sarah? What do you think? Which factor? छोटा questions है. कौन सी ऐसी चीज हुई थी जो सारा जिस पे literally she lost it? Mind के role play. What do you think? List. नहीं, बट एक लिस्ट, वर्कलोड, सब चीजें थी ना, जो सबसे ज्यादा जो जिसपे वो बिल्कुल ही क्योटिक मोमेंट आ गया था सारा का, कि ओके, दैट्स इट. पावर फेलियर, एग्जैक्टली. वेरी गुड. पावर फेलियर, यू कैन सी दैट. Power failure. But what was power failure? It represents uncertain things which can come anytime, right? Things which can come anytime, with things which are out of your control. And life is like that, है ना? लाइफ ऐसी ही है हमारे पास. हमें कुछ चीजें हमारे इख्तियार में होती हैं और कुछ चीजें हमारे इख्तियार से बाहर है. जैसे कि पावर हो गई है. दूसरी बात वेदर हो गया, है ना? वेदर हमारे कंट्रोल में नहीं है. अगर वेदर हमारे कंट्रोल में होता तो क्या बात ही होती. हमें आइडिया था कि हमारे सेशन आगे हो जाएगा, या लोगों के पास लाइट्स नहीं होंगी, किस तरीके से जो है लोगों की लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है ना. लेकिन अब हम क्या करते हैं उस चीज के लिए, उसको मैनेज करने के लिए? Have the weather apps, we have weather apps, we have news, we have, right, we make our plans according to weather, है ना? अक्सर हम जब भी कोई, अब इस्लामाबाद में भी होता है कि अगर भी हमने कोई पार्क में पिकनिक प्लान करनी है ना, तो हम सारे वेदर ऐप देखते हैं. बारिश तो नहीं है ना? So that we can have, yes, so exactly, be prepared. We have to be prepared. And then नॉट जस्ट बीइंग प्रिपेयर्ड, ये चीज हमेशा एक्नॉलेज कर लें, कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं होती, लेकिन हमारा तरीका, हमारा द वे आर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स इट, इट मैटर्स मच, राइट?
If we are emotionally intelligent person, we are going to be composed and calm. We will see, yes, there is a problem, but now what to do next, how to find solutions, right? For instance, मैं बारिश का तो नहीं मैं एक्सपेक्ट कर सकती, लेकिन मैं अगर अपने प्लान्स अकॉर्डिंगली पहले से कर लूँ, मैं एक रूटीन के अंदर हूँ, तो मैं टाइमली मैं जो हूँ अपने ऑफिस में या स्कूल में पहुंच सकती हूँ. नॉट रिगार्डिंग द वेदर कंडीशंस एंड ऑल, राइट? Yes, planning according priority should have backup plan. Yes, backup plan. But then again, वही वाली बात है कि जिन लोगों में इमोशन इंटेलिजेंस नहीं होती, उनमें ये चीजें लैक कर रही होती हैं. And what about the coordinator? How do you find her? Can you tell me any two qualities about her? Any one of you? What was she portraying? Exactly. Yes, empathetic, positive, understanding, calm and motivating. Yes, very nice. Very nice. She was very calm and she was motivating and she had the empathy. She understood where Sarah was standing. She understood her situation, right? आप लोग में से how many of you are on the coordinator right now um, in this level, on the coordinator's level? How many of you are not teachers but are now coordinator or mentor or head? Okay, you had been a coordinator. So how do you mind your new teachers when the new teachers aati hain, so how do you go about with them? I mean, they are like facing a lot of problems because obviously they're not experienced. Okay, okay. So you will learn. So how does Sarah learn? So Sarah takes all the motivation, all the tips of emotional intelligence, and she reflects back. She goes home, tries to finish her task, and she promises herself that she will eventually have good communication. Sorry, just a few minutes. She will have good communication with again open communication with her fellows, with her heads. She will try to manage her task on time. She will try to control her emotions. First of all, she will not let them get in the way, not to get get over she will not let them get overcome her mind, her and then you know um which can state a very bad you can which can just make her lose the focus, which she has just done that, right? So it reflects back. So by again, I'm going to go back to this slide again. Emotional intelligent people, they have self-awareness, right? That's just like the coordinator, she had self-awareness. She know what she was how Sarah was going through. I mean, she understood her emotions, and even Sarah, she herself understood emotions, that she's feeling very angry and everything. But when she with time, when miss the coordinator, she asked her to manage her emotions, self-regulation, keep time पे. फिर empathy, miss the coordinator, she showed empathy, right? She portrayed empathy to Sarah by listening to her, by comforting her, by moral support, right? By moral support, by telling her it's okay to make mistakes and we can learn from the mistakes. Social awareness में क्या हुई? They both communicated because she had empathy. That's why Sarah communicated well. She was able to communicate well. She was going to she'll be able to reflect back to her decisions. And then motivation. Motivation is when she learns from her mistakes. She takes responsibility and accept constructive criticism. हम लोग में से कितने कोई जो है criticism को accept करता है? ऐसे भी लोग होते हैं ना जो कहते हैं नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है, हमसे तो मिस्टेक्स हो ही नहीं सकती. होता है ना? जस्ट अ सेकंड. ऐसा होता है ना? एग्जैक्टली exactly. तो ये चीज है. यस, ईगो के इश्यूज, एग्जैक्टली तरह ईगो आ जाती है ना, ईगो आ जाती है बीच में. This what happens. You don't ever let ego come into your relationship, right? So so that's how. And then what happens? The next day, when she reflects back to her decision, when she reflects back and see that what she can do better, she was able to have a really good time with her students, right? Happy go. कितना अच्छा लगता है ना जब स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा जा रहा होता है ना? एंजॉय करते हैं. आई रियली एंजॉय हैविंग हैविंग एक्टिविटीज एंड ग्रीटिंग माय स्टूडेंट्स, एंड स्पेशली अगर मुझे कहीं बाहर मिल जाए, कभी मार्केट में या कहीं ऐसी जगह पे मैं हूँ, एंड दे यस, जब वो मिलते हैं कितना अच्छा लगता है, जब सलाम करते हैं आते हैं, वी फील सो गुड. Where are your kids as well?
Yes, and try not to repeat the same mistakes again and again. Yes, you can learn from this mistakes, and discipline यही है. इसके अंदर जो है आपका जो ये मोटिवेशन लेवल है, इसमें ये कि यू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड यू डू नॉट रिपीट दोस मिस्टेक्स अगेन, राइट. और आप और एक्सेप्ट भी करें कि गलती होती है. एज a human as a human we term to err, right? So we are going to make mistakes, and and we have to understand the fact that other person also can make a mistake. ये नहीं कि सब सिर्फ ये कि मैं गलती कर रही हूँ तो दैट्स ओके, वो गलती करे तो मैं उसको लेबल करना शुरू कर दूं. हमारे ये बहुत मसाइल है ना. यू स्टार्ट पुटिंग लेबल्स. ही इज गोइंग टू बी लेट. लेट का मारा है ना. बच्चों के ऊपर भी हम लेबल्स बड़े आसानी से लगा लेते हैं. I'm saying these things because this is what is going on in our educational system. We are doing that, whether we are teachers from a very good school background, or we are from, or we are, government के हैं या कोई ऐसे schools हैं, but we are doing that. We need to stop this, right? Okay. Yes, exactly. To be there for correct and exactly. Now, how does emotional intelligence affect us? Now, if we are emotional intelligent, it affects our performance in school. ठीक है. We manage our tasks efficiently with clear mind, right? We can you can say organize our task one by one. शुरू में बात की थी ना कि हम लोग एज ए फीमेल कैसे हैं, मल्टीटास्क करते हैं ना चीजों को. तो फिर मल्टीटास्क करें तो हम मेंटली भी उन चीजों को आराम से फोकस के साथ रिलैक्स होके, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत तेज चल रहा होता है व्हेन वी आर मल्टीटास्क. ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, उसको फोकस कर लें. यस, आई हैव 9 tasks, but I have to go like 1, 2, 3, 4, 5, 6, and I have to set them according to priority. कौन सा पहला टास्क होना चाहिए, मैं उसको करूँ. ये जब तक आपका माइंड सेट या आपका इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी, आपको अपने जज्बात काबू में नहीं होंगे, आप इतनी क्लियर तरीके से नहीं सोच सकती. ठीक है, अपने टास्क वन बाय वन करें, देखें व्हाट इज द प्रायोरिटी फर्स्ट, कौन सा पहले काम होना चाहिए. ठीक है. और जो है क्या कहते हैं, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी अनसर्टन सिचुएशन. अब अनसर्टन सिचुएशन आपका बच्चे को चोट भी लग सकती है. अनसर्टन सिचुएशन में बच्चा आप क्रैंकी भी हो सकता है. ठीक है, घर में आपका बच्चा क्रैंकी हो सकता है. अनसर्टन सिचुएशन में आपका husband भी हो सकते हैं कि husband sometimes can get cranky because he's coming back from office, and sometimes it happens anyone, it can happen with any kind of relationship. So you have to, if you're an emotional intelligent person, you will know eventually how to cooperate with her, how to deal with this situation, right? And especially with बच्चे, है ना. बच्चों के लिए अंडरस्टैंडिंग एम्पथी रखनी बहुत जरूरी है. अब फिर बच्चों के लिए अंडरस्टैंडिंग एम्पथी का मतलब ये होता है कि हम बच्चे के लेवल पे जाएं. अच्छा, मेनी ऑफ द टीचर्स आई हैव सीन, बच्चे के लेवल पे जाने का मकसद उनका मुकाबला नहीं लगाना होता है. बच्चे के लेवल पे जाने का मतलब अंडरस्टैंड करना होता है कि बच्चे जो है उनकी इमोशनल लेवल या उनकी जो वे ऑफ एड्रेसिंग देयर इमोशंस या मैनेजमेंट है, वो बहुत डिफरेंट होती है. ठीक है. हम उनके लेवल पे जाके उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए. वो इसी तरीके से टेंट्रम भी थोक रहेंगे, वो इसी तरीके से अपने इमोशंस निकालेंगे, लेकिन हमने उनको लेबल नहीं करना, या हमने उनके साथ मुकाबले पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है ना. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इमोशन इंटेलिजेंट पर्सन जो होता है, एज अ मदर भी, एज अ टीचर भी, आप अपने बच्चों के इमोशंस को थोड़ा सा, जो उसकी इमोशनल अगर वो टेंट्रम शो कर रहा है, तो आपको थोड़ा उस टाइम पे काम और कंपोज होना बहुत जरूरी है. देर इज नो नीड, ये कोई ईगो का मसला नहीं है. बच्चे इज लाइक दैट. डोंट थिंक दैट गोइंग ऑन किड्स लेवल इज दैट कि आप उनके लेवल पे आके उन्हीं के साथ जो है बिहेव करना शुरू कर. नो, going to the level is that you have empathy, you know where it comes from, and then what you should do. अगर अच्छा, अगर टेम्पटेंट हो करे, गुस्सा दिखा रहे, क्या करते हैं आप लोग? अक्सर मैंने देखा लोग दे स्टार्ट शाउटिंग बैक. तुम किस तरह बात कर रहे हो, बदतमीजी है ये, है ना. होता है ना ऐसे. ऐसे अगर ऐसा होता है तो गलत होता है. बल्कि आपको कहना चाहिए, आई आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड यू गोइंग थ्रू, आई अंडरस्टैंड यू एंग्री, सो डू यू नीड स्पेस. खामोशी गुजार, थोड़ी सी खामोशी गुजार कर ले. बिल्कुल. यू नीड स्पेस. यू ने, और सेम विद अदर पीपल्स एज वेल. जब एक इसी तरह आपको कहते हैं, जब आपका बॉस चीख रहा है या उस पे है, तो डोंट मेक इट अबाउट योर सेल्फ कि नहीं ये भी मुझे चाहिए, तो भाई ऐसे इसी तरह डांटते हैं, मैं रोज ही इस तरह इंसल्टेड फील कर रही होती हूँ. एंड देन यू डोंट नीड टू फाइट at that same particular place. The thing is that it does not mean that you have to fight him at the same person, क्योंकि आपको पता होगा कि उसके इमोशनल स्टेट इस वक्त बहुत हाइटेंड है. आपकी इमोशनल स्टेट हाइटेंड नहीं होनी चाहिए. आप अगर इंटेलिजेंट पर्सन है, आप कोशिश कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं, उस चीज को मैनेज करना सीखे. ठीक है. फिर फिजिकल हेल्थ, व्हेन कमिंग टू योर फिजिकल हेल्थ,
टू फिजिकल एक्सरसाइज, योगा एंड एवरीथिंग। थोड़ा सा फिजिकली भी अपने आप को, कहीं गुस्सा भी आ रहा है ना, क्या चीज होती है, गुस्सा आ रहा हो तो अपनी पोजीशन को चेंज कर लें। खड़े हैं, बैठ जाएं, बैठे हुए हैं तो लेट भी जाएं, तो हमारे हदीस में है पानी पी लें, और आइदर मूव योर सेल्फ आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। सबसे अच्छी तरीके से वॉक इट आउट, बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है। लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज और वॉक और योगा भी जो होती है, हमारी वी गेट टू यू नो थिंक अबाउट योर इमोशंस, यू गेट टू एक्सेप्ट देम, राइट। आपकी अपनी पूरी पर्सनालिटी पे फर्क पड़ता है इफ यू आर डूइंग फोकस एक्सरसाइज हो रही होती है ना योगा पे, कितना आप काम और कितना सुकून सा फील कर रहे होते हैं। और जब आप वॉक कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो आपको ही पता होता है कि हाँ, यस, आई एम लेटिंग देम आउट। आप यू थिंक अबाउट योरसेल्फ कि किधर मैंने क्या, रिफ्लेक्ट होता है अपने आप को, है ना। फिर योर मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रिवेंट्स डिप्रेशन। स्ट्रेस को जो है मैनेजमेंट करने सीखे। इमोशनल टेंशन आपको स्ट्रेस पे जो है मैनेज करना सिखाती है, ठीक है। और वो इवेंचुअली डिप्रेशन से और दूसरे किसी मेडिकल जो इश्यूज होते हैं उससे बचाती है। फिर आपके रिलेशनशिप को भी इफेक्ट करता है, लव केयर एंड काइंड। अगर आप बहुत प्यार तरीके से अपने बच्चों के साथ, आपको पता होगा अपन से कैसे डील करना है, तो इवेंचुअली यू विल हैव लव केयर एंड काइंडनेस इन योर रिलेशनशिप, यू विल हैव एन ओपन कम्युनिकेशन। सबसे बड़ी चीज ये है कि अब बच्चे आपसे बात करें, कम्युनिकेट करें। व्हाई Sarah was open with the coordinator, because coordinator showed her care, love, kindness, and that's the moral support, that's the love and care kindness we need from the fellow। हम लोग क्या, हम ये हमें मिलती है हर दफा मॉरल सपोर्ट? अक्सर तो लोग कंपटीशन पे आए हुए होते हैं, है ना। नहीं नहीं, ठीक हुआ, फिर हम ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं डिस्क्लोज करते, राइट। और सपोर्ट बहुत तरीके से होती है। सो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन जो होते हैं, वो रिलेशनशिप के लिए भी बहुत सोचते हैं, अपने रिलेशंस के लिए, अपने आसपास लोगों के लिए। फिर उसके बाद योर सोशल इंटेलिजेंस, फेसिंग अनसर्टनिटीज विद क्लियर माइंड। यानी आपकी लाइफ में या आपकी वर्क प्लेस में कोई भी अनसर्टन सिचुएशन आ सकती है। कोई डेडलाइन एकदम पीछे हो सकती है कि ओके, डेडलाइन वाज सपोज टू बी ऑन वेनेसडे बट इट टर्न्स आउट टू बी ऑन मंडे, कुछ भी अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो एट दैट टाइम आपने अपना माइंड कैसे क्लियर करना है। अगेन वही वाली बात आ जाती है कि आप अपने टास्क को फिर उसका अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज कर दें, ठीक है। कि मैं जो हूँ, अगर ये टास्क मेरा जो है इस टाइम पे अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैं अभी ये फिलहाल ये काम कर लूँ, इवेंचुअली आई विल डू दैट वर्क लेटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आपका क्लियर हेड रखती है, एंड इट improves your work performance in your life, in your relationship, for your health, and for your social intelligence, right? Okay, I hope it's clear to you, right? Okay. Now, how you can increase your, even if you are emotional touch person, let's say self management, stress management को, right? सेल्फ अवेयरनेस से आप माइंडफुलनेस रहते हैं, राइट, ताकि आपको पता होगा कि मेरी इमोशंस हैं, आई शुड टेक केयर ऑफ देम। सोशल अवेयरनेस क्या होगी? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि मैं अपने जो है रिलेशनशिप्स में अच्छी कम्युनिकेशन रखूं। एंड इफ यू हैव अ रियली गुड कम्युनिकेशन ना, यू कैन अवॉइड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। Oh, thank you, Raila. I love you too. You can avoid lot of problems if you have a good communication. Like for instance, if अगर सारा जो होती है, अगर वो communicate पहले कर देती कि मैम, I was not able to, I was grading papers and this is my I need some support, I need some, तो मेरे ख्याल से शायद मैम उनको जो कोऑर्डिनेटर होती है वो उनको खुद ही दे देती सारा को कि ओके, यू कैन टेक 2 more days एंड मेक अ बेटर वन, राइट। अच्छा, एक और भी चीज होती है, अक्सर ऐसा होता है कि हमारी डेडलाइंस कोई होती हैं, हमारे ऊपर आ जाती हैं, और वी आर नॉट एबल टू मीट देम। तो हम क्या करते हैं फिर? हम लोग फिर कभी यार झूठ बोल देते हैं ना, क्योंकि मैम हम दे देंगे, हम इस टाइम पे दे देंगे। टाइम झूठ ही बोलना होगा ना कि टाइम हम मैम इस टाइम पे आपको दे, नहीं हो रहा होता उस टाइम पे, यूजली नहीं हो रहा होता उससे, बल्कि 4 घंटे आगे हो रहा होता है या एक दिन आगे हो रहा होता है। सो इट्स मच बेटर यू कम्युनिकेट। सच बोल दें। क्यों कहते हैं सच बोलना? सच बोलते हैं कि मैं इस टास्क में हूँ, डेडलाइन जो है मुझे लगता है कि आगे करनी पड़ेगी, इफ यू कैन अलॉट मी अ डे। अगर आप ये कम्युनिकेट कर देंगे ना, तो आई टेल यू इट, इफ इट वर्क्स वंडर। इवेंचुअली आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है, द अदर पर्सन विल से ओके, आई अंडरस्टैंड, अगर वो एम्पैथेटिक पर्सन है, ओके, यू कैन हैव 1 more day। रिलैक्स हो जाते हो, झूठ नहीं दोबारा बोलना पड़ता है ना। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। और सच बोल रहे हैं, उनको बता रहे हो और उनको प्रॉब्लम में नहीं रख रहे। अगर आप ये कह देते नहीं, मैं आपको 4 घंटे तक दे रही हूँ, एंड व्हेन यू नो दैट यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट टास्क इन 4 hours, और फिर आप उनको वेटिंग में रख देते हो, एंटिसिपेशन में रहने देते हो, कितनी बुरी बात होती है ना। और आपके साथ अगर आप ये सिचुएशन अपने ऊपर रखें, एम्पैथी पर करें अपने ऊपर, आप खुद कितने फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, है ना। सो दिस लाइक दैट। हाँ, यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली अमरीन, आई एग्री विद यू, बिल्कुल। सो हाउ यू यूज इमोशनल इंटेलिजेंस? अब हाउ डू यू यूज इट? You be optimistic, like
if you're optimistic, you should be like, no, things will work out for me. I will eventually work things out and I will manage myself. I will learn from my mistakes and eventually I will achieve these goals, right? If this kind of ये इस तरह का mindset या ये thoughts अगर मेरे पास होंगे कि emotional intelligence की जो emotional intelligent लोग होते हैं उनके thoughts negative नहीं होते, वो positive की तरफ जाते हैं. Yes, ma'am Sabina, I'm almost there. And then you be grateful for what you have, right? You should know okay, oh yes, I have this capability, I have this ability, right? I can do it. Then you keep then you avoid anger. When you know that yes, you're thankful for what you right now you have, you try to avoid the anger. You try to you know make sure that anger does not overcome you, and then you check your emotions. आप मैनेज करते हो अपने इमोशंस को, कीप इन चेक करते हो. ओके ओके ओके, चलो ठीक है, फ्रस्ट्रेशन लेवल हो रहा है, ओके ये टास्क भी आ गया, इट्स ओके, वी विल एबल टू मैनेज, आई थिंक वी कैन डू इट, है ना. ये चीजें अगर सेल्फ मोटिवेशन होती है, अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तो इवेंचुअली यू आर यूजिंग इमोशनल इंटेलिजेंस. ठीक है. ओके, कमिंग अप टू नेक्स्ट. नाउ these are three personalities which I find, I've also checked on the internet, find very emotional intelligent people. Do you agree with me? Do you agree with me? Do you find these people very emotional intelligent? ओके कोई एक एट्रीब्यूट बताएं इमोशनल इंटेलिजेंस की. लेट्स से कायदे आजम को ले लें. लेट्स टेक कायदे आजम. कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस का कौन सा कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मेरे ख्याल से तो सारे कर रहे हैं, लेकिन एनीथिंग विच यू फील के कायदे आजम को देखकर कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस का ये कंपोनेंट. यस, एम्पैथेटिक. एंड यस, परफेक्ट, यस, वेरी गुड. Self-aware, self-regulated, managed person. Yes, self-aware, self-managed person. I would more into self-managed person. Motivation for me because yes, he cared for his nation, and the way he dealt with the British and the way he dealt with Indians and how he, you know, the way he, you know, जो उनकी इतना उनका काम है, इतनी उनकी जद्दोजहद थी मुल्क को पाने के लिए, with the communication skills, with the empathy, with motivation, with his speeches, right? He was going through a lot. I mean, if you, we have just seen on in movies, right? But जो जो सिचुएशन कायदे आजम ने उसमें हुई हुई, कितना खून खराबा क्या नहीं था, यानी कि इस पाकिस्तान, इस नेशन ने, एक जनरेशन ने अपनी पूरी पूरी जानें दे दी हैं मुल्क को, मुल्क हासिल करने के लिए, राइट? तो कितनी ये सिचुएशंस थी. ही वाज इमोशनल इंटेलिजेंट इनफ to get, you know, to achieve his goal. The goal was to get Pakistan right. And what about ED? How do you relate ED with social with emotional intelligence? Empathetic and emotional, exactly, emotionally stable. He was one person who was so empathy, and he was जो situations वो देखते थे, he would find little babies in dumpsters and then he will take him to the jhulas and then he will, you know, the way he had worked, the ambulances, everything. And it is somebody social, यानी emotional intelligent person है जिसको अपनी जो अपनी इमोशंस पे काबू है और वो फोकस होके, आई मीन लुकिंग एट सच हार्डशिप्स एंड अगेन ही इज focused on work. What about Elon Musk? I find him emotionally intelligent person because you know why? Why do you think Elon Musk is emotional intelligent person? तो हमें ये तो पता है कि जो लेफ्ट एंड राइट पे जो पिक्चर्स हैं, हमें इनका अंदाजा है कि वो तो है ही इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल. दे आर एम्पैथेटिक, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड. व्हाई एलॉन मस्क, इसको पता है एलॉन मस्क क्यों उतना इमोशनल इंटेलिजेंट है? ओके, बिकॉज ही इज मोटिवेटेड. He does not. Do you know how successful he is? Yes, he represents exactly Amreen. He's successful. He's a world's billionaire. And he, what was he? कोई पीछे से बिलियनर की फैमिली से तो नहीं आता, ये बना है बिलियनर by working hard, by being focused. He also has faced so many failures. He did had people in his life who were not empathetic towards him. है ना. इसकी अगर कोई आप बायोग्राफी या इसकी पढ़ें, इसकी हिस्ट्री, कितना यानी कि he was going through a lot and then trying new things. Again he is trying new things, he's making new things, and he has intelligence. He talks about so many things, he predicts so many things about the world, right? So he, for me, he's an emotionally intelligent person. Elon Musk. Elon Musk, right? His real his name is Elon Musk. Okay, now हमने सारी बातें की इमोशनल इंटेलिजेंस की, हमें नीट का भी पता चला है, हमें पता है कि, बट अगेन सवाल ये रहा है,
Why do we need it to cultivate emotional intelligence in teachers? ये सवाल का जवाब कौन देगा? Why do you think? Yes, हमने अभी लीडर्स भी देखे हैं. क्यों टीचर्स के लिए खास तौर पे क्यों है? हालांकि हर प्रोफेशन में है इमोशनल इंटेलिजेंस. ओके, अच्छा. अब एक मैं ब्लैंक दे रही हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड पे, आपने उसे फिल करना है. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट इट राइट. So the blank is students perceive us teachers as both dash and dash. क्या होगा? Influence. There are two words, very important words. It's all these two words also portrays the two personalities जिनकी मैंने pictures दिखाई हैं अभी आपको. But for making good nation, what do you need? Leaders, exactly. Very nice. As both leaders and there's another word. What are we to students? Motivators. Yes, you're getting there. You're getting there. You're getting there. Motivators. No, no. Okay. Role model. Exact. Very good, Sabina. That's amazing. Ma'am, Sabina, you're amazing. They perceive us teachers as both as leaders and role models. They look at us leaders. हम जिस तरह उनके साथ पढ़ाते हैं करते हैं वो हमें देखते हैं. We tell them how to do things. We are leading them. We're leading them towards greatness. And role models because how we are talking, how we are sitting in the classroom, how we are communicating with them. We are role models to them. Parents तो हैं लेकिन parents से ज्यादा हम teachers का role है as a role models. Yes, we are ideal personality for them. कितने कितना हम सबके लिए होता है. हमें आज भी याद है हमारी वो टीचर्स जो हमारे लिए रोल मॉडल्स थी. I mean, I remember my English teacher. I used to be so impressed with the way she used to talk, the way she used to dress, the way she used to sit. Really, Hannah? Exactly. So I hope you get the concept of this webinar and the reason why I wanted to talk about it. I didn't went to the to the scientific theories or why. I just wanted कि हम एक बात करें जो हमारे नॉर्मली आजकल एजुकेशन में होनी चाहिए. At least we should talk about emotional intelligence. We should know. हमें अपने सोचना चाहिए इस बारे में. Should reflect back how we are teaching in the classroom. How is our communication with our peers, with our fellow teachers? Why we need to hide information? Why there's a, you can say, negative competition. I mean, risk and everything is given by Allah, right? So why we need to portray emotional intelligence? How better, कितना बेहतर कर सकती है हमारे लिए, right? So why we are not talking about it? So we're coming to end of this presentation. I hope you enjoyed this session. I just want to give a little bit reflection on this. So basically, this webinar they had three key roles. Emotional intelligence has been undervalued and overlooked in education. Promoting emotional intelligence education is crucial and relevant to all professions, not just teaching. You know that you are not just teaching kids, you are raising generation who's going to be doctors, engineers, and business and entrepreneurs, and so many people, and so more, scientists even. By fostering emotional intelligence, we can better navigate emotions, build relationships, and make informed decisions in all aspects of life. So we do not want to end up again with people having conflicts and then not resolving those conflicts. Eventually, it does helps you resolve a conflict, right? To conflict be एक natural चीज है, ठीक है? That's up for me. If there are any questions, I would like to take now. Ma'am Sabina, do we have time for the questions, or have I taken all the time for this webinar? Thank you, Tabassum. I just hope we understand like where we are right now. Uh, Actually, there is no time for questions, but yes, we Okay. can take one or two questions. If anyone wants to give a verbal feedback to Miss Sana, you're most welcome to unmute yourself and speak. Yes, anyone. Anyone before I start, giving my thank yous. Yes, anyone who wants to speak, who wants to. Yes, I want to speak. Sure, good.
Thank you so much, Miss Sana. I really am impressed by your way of teaching, and from now onwards, you are my on-to-go list for being motivated. I'm very much motivated by your session, and I really enjoy. I really, to be Thank honest, you. it was an awesome, and I really like the way you made your presentation. It was fabulous. Thank you so Thank you. much. Thank you so much. I'm honored. Thank you so much. Anyone else? Assalamu alaikum. I'm Ifra Batul. Uh, Thank you so much for arranging this. I really enjoyed it, and I think it is a need of time. We all need to be emotionally intelligent, to deal the class and to be to have the great influence among the students. So thank you so much for this, and Thank you. the presentation in the class was amazing. Thank you. Thank you Thank you so so much. much, Ufra. All right. Thank you so much, Miss Sana. Now, I know my choice was never wrong because you won my heart during the bite-sized session. And when we used to have our discussions, I knew that there was something special about you. And Oh, you thank proved you. me right. You literally proved me right. And really, I'm thankful to myself that I made the correct decision and I invited you. And I'm so thankful to you, Miss Sana, that you readily accepted my invitation. And the way we corresponded, we communicated, and the way you showed your interest, your inclination towards conducting the webinar. And even today, when you showed your concerns about, how things were in Karachi, especially the cyclone and all that. So you see, everything is worked out well. The weather is Alhamdulillah. much better. And really, I enjoyed your session. And what I loved was that you took you connected it with the daily lives of the teachers. That's what is important. Connect it with them. Exactly. And Yeah. that's how they will learn about emotional intelligence. And I love the story of Miss Sarah. And actually, you built on upon that story everything. And I was just thinking, I said yes, and another factor is also procrastination, because she delayed everything, before the electricity. Exactly. She We delayed do everything. that. We do that. Yeah. Yeah. I mean, yeah, we need to So reflect that as well. We need to reflect that they are okay. We also are going to make mistakes, or we have to learn from the mistakes, and we also have to understand that, other people also make mistakes. It's just about the factor of empathy. That's all about it. We need to do that, and there's just some balances which we need to. And thank you exactly. so much, Ma'am Sabina, for believing in me. I was so nervous. Nahi, Honestly, I was you so were nervous. fabulous. You were fabulous with your presentation, Miss Sana. And really, you are a wonderful mentor and trainer. And Thank you you. are absolutely a blessing for Dastak. Just like I see my own mentors, that is Miss Saima Imran and Miss Farah Musharraf. They Yeah. are part of, Dastak Yes, program. they are. They And are amazing people. they Amazing, are both of amazing them. people to work with, both of them. Exactly. And now when I see I know what you are doing in Islamabad is really amazing and it's wonderful. And keep it up, Miss Thank Sana. you. And I wish you Thank all you the so best much. for your Thank you for so your much. journey. And I hope, like you touched our hearts, I wish you touch more hearts with your teaching, with your training. And I hope this effort that we are doing for the teachers bears fruit. That's what we are all actually working towards. That I truly agree with you. And thank you so much, Ma'am Sabina, for believing in me and providing me with this platform. I Most cannot thank welcome. you so much. Thank you for And this I will be acknowledgement. bugging you in the future. Yes, I would love to be bugged by you. I'll be bugging I'll you. be Right, exactly. the I'm there. participants, we want another session by Miss Sana. Oh, that would be so nice. Thank you. Thank All right. So thank you, dear participants, for Yes, we attending. want one more session by her. See, there it's come. So I see, am in that boat with you. yes. So you. we are going That's to plan it that out. is so We will sweet. come back with another session with Miss Sana. So thank you once again, Miss Sana, and dear participants. The way you all participated, really, that was awesome, 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 wonderful, really wonderful. So till then, take care of yourselves, and thank you, Miss Sana, for gracing Impart and Thank you, for Ma'am Sabina. making our Sorry, I standard.
I just forgot to thank the participants. They were so interactive, and Yes. there's one of the reasons that this session, it's successful when the participants are actually, with you. They're talking to you, they're responding you back, and so many points that you can have from them. So my, my great, you can say, my deeply thanks to them. Thank you so much for acknowledging, and thank you so much for being part of this webinar. Thank you, and thank you, Ma'am Sabina, again. You're most welcome. Thank you, Miss Sana. Chale, take care of yourself, dear participants. And until next, in fact, there's a guest trainer, I think now next month. Yes. So, Miss Anna, I want you to be, a part of the webinar series, and you're most welcome to even attend and have a look at the other sessions also. And we will be coordinating for the next session by you. Okay, Miss? Chale, take care of yourselves, okay? Allah Hafiz. Take care. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.